Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing great. So in today's video, I will try how was my 2025 because 2026 is coming. Only 2 days are left. So I'll try that how it was my 2025 year. Okay. So guys, in my 2025 if everything was going so bad, good, nothing. But the happiness was 25% and the sadness was 75%. Why I said to this? Because in the last from the January or February, my husband work was not going so well, so that's why he has so many financial crisis has came in our life. 2025 nobody's there to support us, like his family or my family is not there to help him in a financial ways also. So my husband was going to very depression, he was going so irritated by some time because we are staying on rent. Okay, so that's why I took so many things, so many times I thought about it, that why I cannot do these, why I cannot these things, why I cannot help to my husband. So I tried so many things to help my husband. I'll waste my 4 months at my home, like February, March, April, May. I wasted at my home. My husband was not doing anything, nothing he was doing. He was going to his work, nothing was coming back. Like because my husband he is working in Ola and Uber he was driving. At that time the Ola rate was very bad, the Uber car was very bad, and we have don't have insurance also. So that's why my husband has had a fear when he was going on the road. So whenever he was saw the traffic police, he saw very, he fall very down, and he said to me, if Neetu, if traffic police was caught me, so I think I should take more charges because I don't have insurance. So many crisis has came, and after that in September, like when so many things, I said so many things to my family as well. I said to him that my son health was not going so well, and at the time that broke my heart. And at the time thought one thing in my mind: when you want something, you want your help from your family members, nobody is there for yourself. उस टाइम मैंने उस सिचुएशन को इस तरीके से लिया ना, my family is coming and there is nothing at my home, there is no 10 rupees was there. I called to my mother, then I said to her that in my home there is nothing, there is no money. Then he said, okay, no problem. And Gunu was sick, he has a fever, he had a fever. At that time my mother said, okay, no problem, I have 1,000 rupees, and I never told to your father, I never tell to your father, and Ansu is coming to your home and he will give you. I saw that situation also, and at that time I thought about that how the journey was 2025, what's going on. Everyone was there, everyone was expecting this, that I'll go there, and I said to my everything, and then they will give me भीख. भाई मुझे भीख नहीं चाहिए थी एट दैट टाइम, आई वॉन्ट सपोर्ट, सम सपोर्ट. ठीक है, cool down. So I just want some help from my family. At the time nobody is there for me. In September, when my son was completed his 2 years, at the time I just took one. In 2025, in 6 September, my son completed his second birthday. At that time I realized that now it's time to do job for myself. And I said to my husband, I said to my sister that, because already she was working in a company, and I said to her, Rachna, please find a job for me because it's very important for me, because in my kitchen there is nothing. Like all the peoples come to me, they were saying that, oh no, there is no problem, but they never talk to me, they never feel that if you have something they cannot give you. Okay, I started job. Go to my I lose my son, like he was only 2 years old, and I lose him at my home. Then I started go to my office, I'll work there. I work in the morning. After the evening time, when I was coming at my home, I'll go to my mother house. After that I'll pick him, my house, this house, then I'm going. Then I worked there 8 months, and in the 8th month I realized one thing: nobody is there for you. Only me, my husband is 3 person, he's there for me.
So only my maternal house, they family, they supported me. And my father said to me, Neetu, if I educated you, why I educated you? Because in your life I saw that in everyone's life so many hurdles will come, right? So it doesn't mean that you should stop your journey. No, you should not stop your journey, you have to work on it. I can help you now, but after my death nobody can help you. So it's high time to work yourself. मैंने जॉब करना स्टार्ट किया. आई स्टार्टेड डूइंग जॉब. आई वर्क देयर 8 months. आई help to my husband, and at that time I was not investing 1000 rupees on me. I never investing on him. I was going there every day. I was going to my office. My son was staying 4 days continuously in my mother house. My mother is take caring of her, and nobody is there for me asking that how is your going, is your life, you are fell down so sick, you are going to दिन पे दिन तुम बहुत पतली होती जा रही हो. Nobody is saying this. Everyone saying is different, like कितना पैसा कमा रही है देखो. See his husband and her both are earning money, and they are earning 50,000 rupees. Where they will go? They will lose their kid, their maternal house. But no one see our condition. भाई 2025 में बहुत कुछ हुआ. एंड द रियलाइजेशन वॉज लाइक, जब मैंने जॉब करना छोड़ा, एट ए टाइम इन द नॉट इन द हिज नवंबर, फ्रॉम द हिज नवंबर और दिसंबर, नॉट नवंबर और दिसंबर, जुलाई और मार्च, द कंडीशन was आई September, October, November, December, January, February, March, April, in May. In May, when I was going to my house, at that time my son was crying. And my son was crying, literally he was crying, and I said to her, "No, I will come. I will come." And a full day he was crying, and I was going on the bus, and I did video call, and I saw him. I said to my husband that today Gunnu is crying. Gunnu is crying so much. What should I do? He said to me, like, sometimes we both are crying too much. We are saying like, why that situation come to our life. Okay. मैंने जॉब करना कंटिन्यूस किया. सम टाइम लाइफ ये था, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जा रही हूँ ऑफिस में, बच्चा मेरा रो रहा है, लेकिन मेरे को ऑफिस जाना है, कैसे भी मुंह बना के ऑफिस जाना है. ठीक है, मैंने जॉब्स कंटिन्यू किया. बट एक टाइम ऐसा आया, अब नाउ माई गुन्नू वॉज कमिंग मोर देन 2.5. तो उसको रियलाइजेशन हो गया कि मेरा घर कौन सा है एंड नानी का घर कौन सा है. एंड आफ्टर दैट एट द नाइट he was crying all the day, and my mother was calling to me. He said the full day Kunnu is crying, and now he is missing you. I said, okay, oh, nobody, I will come at night. So when I come back to my home, at that time I have some fever. So I said, Mama, I'll come my in-laws house, I'll sleep, and after that I'll see what will happen next. So he said after 12 o'clock my mother called me, and my mother called me. She said, Nitu, still Gunnu is crying. What should I do? I said, what happened to her? Why he is crying so much? He said only one line, कि मम्मा के घर जाना. And after that, I said to him, my husband and me was there, and I said, okay, don't worry, come to there. At the time, my son and my brother and my sister was coming there in the night time at 12 o'clock. And after that, he is going to chicken pox. After that, I took 15 days leave. After that, what happened, I'll message, or I drop our message to my company that I'll try. Today I never come now, because I cannot come because my son has chicken pox, so I cannot come there. After that, I'll just take care of him 15 days, because there is chicken pox 7 to 8 days, and after that he has some fever, he has a cough like this. And doctor said to him that he has some asthma problem, so a mother can take care of himself a very big, in a good way. So I asked to my husband, should I do job or not? So he said, no, now it's high time to quit job. I'll take care of you and your kid also. I said, okay, no problem. So I'll drop a message to my office that I cannot come because I need my kids need me. After that, I dropped this message, and from the last 8 to 9 months I helped my husband. So that's how my 2025 it's going on. So guys, life hai, up and downs will come in your life. Nobody will see your pain, nobody is seeing you.
But in 2025 I realized one thing, who is mine and who I am. भाई कोई किसी का नहीं होता, मुसीबत होती है तो कोई किसी के पास भी नहीं आता। जब मैं अपनी सिचुएशन किसी को बोलती थी ना कि आज मेरे घर में ये है, सामने खड़ा होकर इंसान नीचे चला जाता था। तो वो सिचुएशन मेरे दिमाग से नहीं निकलती है और मैं निकालना भी नहीं चाहती। बुरा टाइम सबकी लाइफ में आता है, आपकी लाइफ में भी आया होगा, ज़रूर आया होगा। देखो, और ये तो मेरा लाइफ का बुरा टाइम था। मैं कहती हूँ यार बहुत लोगों के लाइफ में तो और भी बुरे टाइम होगा, शायद मेरी लाइफ में और अच्छा भी आया और बेकार भी आया। देखो, लाइफ टीच यू एवरीथिंग, एवरीथिंग आपको सिखाती है, लेकिन उस टाइम आप अपने आप को कैसे मोड पे रखते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। मैंने आई डिड एवरीथिंग फॉर मी फॉर माई किड ऑल्सो। अब उस जर्नी को मैं दोबारा नहीं जीना चाहती हूँ। जब अपनी प्रॉब्लम किसी को शेयर करते हैं ना और सामने वाला सुन के फ़ोन कट कर देता है। हमारी वो कंडीशन थी, मेरी और मेरे हस्बैंड की। सबको लगता था अरे यार ये घर में रह रही है, बाहर है, अच्छा खा रही पी रही है। भाई हमसे पूछो, 10 रुपए के ना लाले पड़े हुए थे, ठीक है। तो वो कंडीशन हमने बहुत अच्छी जी है। अब नहीं चाहती 2025 फिर से आए लाइफ में। 2026 बहुत अच्छे से आए, बहुत अच्छे इन्जॉयमेंट करें। लाइफ है, अप डाउन तो आता ही रहता है। बट इन 2025 में मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ कि नोबडी इज़ योर, नोबडी। आपके सिर्फ कुछ लोग होते हैं एंड देयर आर ओनली 5 to 6 पीपल्स इन माई लाइफ हु इज़ मोर मैटर्स टू मी। जिसके लिए मैं जान दे भी सकती हूँ, नॉट जान दे सकती हूँ, जिसके लिए मैं कर्जा ले भी सकती हूँ, दे भी सकती हूँ, निकलवा भी सकती हूँ, निकाल भी सकती हूँ, ठीक है। तो आप कुछ लोगों को तो पता है, कुछ लोग तो मेरी लाइफ में इतना एग्जिस्ट भी नहीं करते कि मैं उनके सामने बात भी करूँ। मैं वो बंदी हूँ, रियलिटी में मैं वो इंसान हूँ, अगर मैं किसी से नफरत करूँ ना, मैं सामने खड़ा हूँ, मैं इग्नोर करके निकल जाऊँ। मेरे अंदर वो ईगो रहता है, ठीक है। तो लोगों की कुछ बातें हैं लाइफ में और होनी भी चाहिए। 2025 में मुझे बहुत कुछ सिखाएगा इस, बहुत कुछ। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेरे लिए पैसा कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा है लाइफ में, क्योंकि देखो अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, पैसा भी आता जाता रहता है। कभी किसके पास रहना है यार, पैसा किसी के पास नहीं रहना, रिश्ता रहता है, ठीक है। अब ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी यार, बहुत लॉन्ग हो गया सच में। जब अपनी चीज़ें बता रही हूँ ना, आंखों में आंसू आ रहे कि यार कैसा रहा 2025। मैंने जॉब किया, छोड़ दिया, बच्चे की टेक केयर किया, बच्चे को अस्थमा की प्रॉब्लम आया, तब किसी ने नहीं पूछा। क्या क्या लाइफ में स्ट्रगल आते हैं, बट सबकी लाइफ का अपना स्ट्रगल होता है। ये मेरी लाइफ का स्ट्रगल है, जो मैंने सोचा कोई मुझे आके साथ में ना दे कि हाँ ये करना वो करना, कोई नहीं खड़ा होता। बस एक मेरी सिस्टर, मेरा भाई, जिसकी वजह से मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मेरी ईएमआई इतनी बाउंस हुई है, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड का सिविल डाउन हो गया। फ़ोन ईएमआई पे निकाला, फ़ोन खो गया, फ़ोन टूट गया। भाई बहुत रोले पड़े हैं इस ज़िंदगी में, सबके रोले पड़े हैं। सो गाइज़, बहुत चीज़ सिखाया है 2025 में, मे बी 2026 और भी कुछ सिखाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ ओनली आई टुक वन रेजोल्यूशन फॉर माई सेल्फ कि किसी पर डिपेंड नहीं होना है लाइफ में। उनको तो प्रायोरिटी देना नहीं है जिसने हमें प्रायोरिटी नहीं दी, जो मुंह पे दिखावा बनते हैं ना। और रियलिटी में मैंने ऐसे लोग देखे ना, मुंह पे राम और पीछे क्या छुरी चलती है ना। आई सॉ इट वेरी वेल। हमारी बात सुन लेंगे, दूसरे से चुगली कर देंगे। और अपनी बताओ ना भाई, अपनी भी बताओ कि हम भी ये भागवत गाते हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत देखा है, बहुत अच्छी मेमोरी भी थी, अब मेमोरी भी है बहुत। लेकिन कहते हैं ना, अच्छी मेमोरी कहीं ना कहीं छुप जाती है, लेकिन बुरी मेमोरी ना, कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में है। पैसा कमाओ, अपने लिए कमाओ, कोई किसी के लिए नहीं कमाते गाइस। बट आई लव माई हस्बैंड, आई लव माई किड्स, सो दे बोथ आर माई लाइफ। सो फाइनली गाइस, हम वीडियोस को एंड कर रही हूँ। बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, लिटरली आंसू आ गए थे वीडियोस बनाते बनाते। जब भी वो टाइम याद करते हो ना, एक मदर के लिए इतना ईजी नहीं होता अपना 2 साल का बच्चा छोड़ना। मैं उस चीज़ को कैसे जीती थी ना, नो बडी कैन एक्सप्लेन इट, नो बडी कैन अंडरस्टैंड इट। सुबह घर का काम करके जाओ, कुछ छोड़ के जाती थी, ब्रेकफास्ट भी नहीं करती थी, ऑफिस चली जाती थी, ऑफिस में भी जा कर के 10 बजे पहुंचती थी। 10 बजे के बाद खाना हो रहा है, लंच हो रहा है 1:30 बजे। तो वही जो शरीर की बैंड बजी ना, शरीर में इतनी प्रॉब्लम इन माई बॉडी, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, नो बडी कैन अंडरस्टैंड इट, ओके। तो वही सब लोगों के माइंड सेट है, अरे यार दे अर्न इट वेरी वेल, नाउ दे जस्ट परचेज अ फ्लैट फॉर हिम। लाइक अभी तो घर में लोगों को ये खिचड़ी पक रही है कि मैंने एक मकान खरीद लिया, बट पकनी सही है, मैं लूँगी, ज़रूर लूँगी। इतना विश्वास मुझे खुद पर है दैट आई विल परचेज अ हाउस फॉर माई सेल्फ एंड आई विल नॉट टेक माई हस्बैंड हेल्प। सो दिस इज़ माई 2025 ईयर। सो अपनी भी जर्नी शेयर करो, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, उस चीज़ का स्टार्ट अप करो। बाय बाय गाइस, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो।
15 मिनट मैंने बैक टू बैक बोला है। बहुत अच्छा लगा शेयर करके अपनी जर्नी।